भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रदेश 10 नवंबर 2025 को एक विशाल पर्सन रैली आयोजित करेगा। 2 लाख से अधिक श्रमिकों की उपस्थिति की रणनीति और योजनाओं पर चर्चा के लिए आज अहमदाबाद श्रम साधना भवन क्षेत्र कार्यालय में संबंध संगठनों के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राजेंद्र सिंह चुड़ासमा भारतीय मजदूर संघना मीडिया कन्वीनर जवाबदारी है त्यारे आप જોઈ રહ્યા છો કે પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ મજુમદાર સાહેબ, ભારતીય મજદૂર સંઘ અધ્યક્ષ મહામંત્રી ગિરીશભાઈ પટેલ સાહેબ એમના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય મજદૂર સંઘે પહેલીવાર 1 લાખથી 2 લાખ વચ્ચે શ્રમિકોની રેલીનું આયોજન કર્યું છે। રેલી એટલા માટે છે કે ભારતીય મજદૂર સંઘ હંમેશા સંવાદમાં માને છે, પરંતુ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય મજદૂર સંઘ સમાજમાં ક્યાંક કાં તો થાપ ખાઈ ગઈ છે, કાં તો જાણી જોઈને નજરઅંદાજ કરે છે। ત્યારે भारतीय मजदूर संघ नाराजगी भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष महामंत्री मारू नाम गिरीश कुमार लालजीभाई पटेल, भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रदेश में प्रदेश महामंत्री तरीके की जवाबदारी। आप सौ मित्रों खूब सारी रीते जाणो छो कि भारतीय मजदूर संघ ए विश्वનું સૌથી મોટું શ્રમ સંગઠન તરીકે કાર્યરત છે। ભારતીય મજદૂર સંઘ ગુજરાત પ્રાંત દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવિધ સંગઠનો એટલે કે ભારતીય મજદૂર સંઘ સાથે સંકળાયેલા મિડ ડે મીલ, પરિવહન, આશા, આંગણવાડી, કોર્પોરેશન, પોર્ટ, GMDC જેવા સંગઠિત અને असंगठित क्षेत्रना श्रमिकों प्रश्नों માટે વારંવાર રજૂઆત કરી રહ્યું છે। परंतु मजबूदार है। मैं प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ गुजरात प्रदेश का। और आज जो आप यहाँ पे आए हैं, ये हमने जो बैठक रखी है वो हम 10 नवंबर को हमारे जो संस्थापक है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उसकी जन्म जयंती के दिन गुजरात में जो भी क्षेत्र में वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, उसके जितने कर्मचारियों के जो भी प्रश्न हैं जिसके ऊपर सरकार की और सरकार के साथ हमने बहुत बार बातचीत